आफ्टर दैट हम फ्रंट मोनोशॉक से वो लगाएंगे, उसके बाद हम लगाएंगे रेयर मोनोशॉक, और उसके बाद we will fit the disc brakes and the front wheel and the rear wheel and the sprocket and chain, all right. And in the last stage we will fit the fairing, the front jump, the rear monoshock, silencer, magnet cover, wheels, new sprocket, new axle, new chain, new disc systems, and the bolts. मैग्नेट कवर फिट हो चुका है, और मैं आपको बताया चलूँ कि ये 124 सीसी है। दिखती ये 70 का इसका इंजन है, लेकिन जो इसका हेड है वो बड़ा है, तो ये 124 सीसी होती है, इसका पिस्टन बड़ा होता है। हमने फाइनली ये इंजन के पार्ट तो लग चुका है, अब हम लगाते हैं साइलेंसर। So guys, now engine is ready and now we are moving towards the front shock absorbers. Jumps fit हो चुके हैं and now we are moving towards the disc brakes. तो गाइस, बाइक के जो बेसिक पार्ट्स थे वो लग चुके हैं। अब बारी है फेयरिंग की, तो अब हम चलें फिर फेयरिंग की तरफ। लेट्स गो। गाइस, हम लोग अभी सब कुछ फिट कर चुके हैं, टैंक, टायर, सिलेंडर, सारी चीजें। अभी हम सिर्फ मडगार्ड फिट कर रहे हैं, क्योंकि बाकी की जो फेयरिंग है वो डायरेक्ट सीट में स्क्रू से फिट होंगी, तो वो हम बाद में करेंगे, फिर पहले मडगार्ड फिट करेंगे। चलो लेट्स गो। आप लोग को हमने फेयरिंग फिट करते हुए नहीं दिखाया, ठीक है, बिकॉज इट वॉज अ सरप्राइज। सो surprise ready now, and the bike, the Honda MT124, is now ready. So guys, फाइनली मेरी सपोर्ट से, मेरी कोलैबोरेशन के साथ, मुस्तफ़ा की कोलैबोरेशन के साथ, जो मेरी बहन है उसकी कोलैबोरेशन के साथ, फाइनली बाइक रेडी हो चुकी है। और हमारे अब्बा की बहुत सपोर्ट रही है इसमें, तो उसमें उनकी वजह से हम लोग इस प्रोजेक्ट को मुकम्मल करने में कामयाब हुए। तो अवान साहब को गिफ्ट जो देना था, वही वेलकम बैक गिफ्ट, तो वो उनको हम अब
मुस्तफ़ा साहब उनको मतलब उनकी बाइक की चाबी देंगे। तो Hello guys, first of all, you guys need to know. Oh my god, no. The last thing you guys need to know is that you guys are probably going to see this whole video, this whole thing in just probably like 10 to 15 minutes, but this actually took us 5 hours. It's like 5 in the morning right now.